That's what I mean. You must say, लोग पूछते थे कि इस बार आप क्या अलग करने वाले हैं? बोला अलग क्यों करूंगा मैं? कैरेक्टर है, मौसम थोड़ी है कि अभी बदल जाएगा। बहुत टाइम बाद मिले। हाँ। एक तो तुम लेट आए। 20 जैन को मिशन मजनू आया था जिस दिन मेरी बेगम का बर्थडे था। तो उस दिन पे मेरा हाँ मिशन मजनू, और उसमें हीरोइन का नाम नसरीन था जो मेरी बेगम का नाम है। Hi, I'm Kubbra Sait. Hi, my name is Ridhi Dogra. Hi, this is Maanvi Gagroo. Hi, I'm Sharib Hashmi. हाय, मेरा नाम है नवीन कस्तूरिया। 2, 3, stay. Hi guys, welcome to Filmibeat. This is Murtaza Iqbal and आज मेरे साथ इस राउंड टेबल पे है ना ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स जिनको मैं कहूँगा 2023 में ये छा गए थे OTT पे एंड नवीन जो आज पूरे राउंड टेबल आपको पता चल ही जाएगा why नवीन is getting so much of importance. But yes, let me start by saying this. नवीन, शरीफ भाई, मानवी, रिद्धि and कुबरा. Hi guys. Hi. Thanks, Murtaza. Thank you कुबरा. I just आगे मत बोलना कुछ भी शब्द बोलना. I know what I'm going to say. That's why. ये एंड और ये एंड मेरा तो चल रहा है भाई। ये एंड और ये एंड मेरे को चल रहा है। हाँ, नहीं यहाँ सबके साथ ठीक हो, ठीक है? ये दोनों के साथ मेरा चल रहा है। So of course amazing 2023 for all of you. अगर आप लोग को खुद को सम अप करना होगा साल तो आप कैसे करेंगे? Who wants to go first? आप हाँ, आखिर में आया हूँ। जो सबसे लेट आता है उससे स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, क्यों कैसा रहा साल? पूरा साल 2023 को सम अप करना होगा। in not more than a few words. अच्छा मतलब अच्छा रहा यार। शुरुआत पिक्चर से हुई थी। आई थिंक दिसंबर एंड में वो आया था और अंत एस्पिरेंट से हुआ है। सो हाँ बीच में कुछ भसोड़ियाँ हुई हैं बट अंत भला सब भला। सो इट्स बीन अ गुड ईयर। राइट, शरीफ भाई क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए भी 23 बहुत खूबसूरत रहा। नए साल की शुरुआत में ही मतलब 20 जैन को मिशन मजनू आया था जिस दिन मेरी बेगम का बर्थडे था। तो उस दिन से मेरा हाँ मिशन मजनू, और उसमें हीरोइन का नाम नसरीन था जो मेरी बेगम का नाम है। तो ये एकदम ही मस्त चीज़ थी। फिर अफवाह, ज़रा हटके ज़रा बच के, तरला, ये सब, तरला स्पेशली मेरे लिए बहुत ख़ास फिल्म है। तो 23 हैज़ बीन रियली ब्यूटीफुल। एक तो इस साल मेरी एक और लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ, मैं उम्रा करके आया पूरे परिवार के साथ। तो ये साल बहुत खूबसूरत था। सर ने ना कमेंट किया था मेरे पेट अंदर लगा और तरला जैसी पिक्चर करेंगे तो मैं और खाता रहूंगा। अच्छा, you said तरला जैसी। Yeah, because if you have watched that film और ऐसे सीन्स है सर तो सिर्फ खा ही रहे, वो टेस्ट करवाते जा रहे हैं और सर खा रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस है वहाँ पे। मैं जब खा रहा था तो जो लाइटमैन और सब थे ना, सर जल्दी करो भूख लग रही है, हमको भी भूख लग रही है। सबके मतलब राल टपक रही थी सबकी मुंह से। ठीक की बात ठीक। I had some 10 portions of नल्ली निहारी। Amazing. उसके बाद लंच भी किया। The only time in my life when I feel like I want your job. Yeah, I know. The only time. If you can eat 10 Nalli Nihari, I want your job. I had a great year, touch wood. I started by getting married. Yeah. Oh yes! Oh! Congratulations once again. Not an achievement really, but no, it's a happy नहीं, news. अरे हाँ, Such an It's an achievement, yo. यही समझ के चलो अभी फिलहाल। शुरुआत है तो यही। शुरुआत है तो इसी। Thank you. Then won my first film fair. Then did one like Half Love Half Arrange, shot it and it came out, got great reviews. Did one film, like lots good stuff happened. Traveled a lot. So yeah. And कोइंसिडेंस, शादी हुई और ना सीरीज कम जहाँ पे शादी की बात चल रही है। Correct. कि शादी करूँ या ना मैं करूँ। Yes. I think 1,000 करोड़। Okay, yay! I think for me it's like a year. I look at it like it's the beginning. That's what I see it as. That it's the beginning of what I can do. It's like 1% of मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ, उसका 1% हो गया है. Like I say, it's been like I've been saying everywhere. It's like an audition year. बहुत audition दे दिए, बहुत शुरू से लेकर end तक सब कुछ मेरा audition था. So good year. Yes. Of course.
2023 for me has been a year of incredible learning. मुझे इस साल realize हुआ कि जो सीखा था वो वापस सीखना पड़ता है, and that was personally. So I've had a very fulfilling year just understanding who I am as a person, and it's been an excellent year that way. But professionally यार फर्जी आई, उसके बाद the trial came out, and now Shehar Lakot. So I've had a professionally extremely touchwood successful year. And I made my debut as a host. And Filmbeat, OTT, we did that together. मजा मजा आ गया, मजा, बहुत अच्छा साल, very good. Right. You know, जैसे हमारी बात हो रही है, लेट मी टेल यू, जो कुब्रा क्यों मुझ पे इतना पॉइंट कर रही है, इज अबाउट मी नॉट वाचिंग वन ऑफ हर सीरीज. मैंने बाकी 2 पूरी देख ली है, द थर्ड वन थोड़ी बाकी है मेरी. सो आई वांट टू आस्क दिस, दैट समवेयर ऑन द अदर एंड यू ऑल आर डूइंग ओटीटी फ्रॉम नाउ सो मेनी इयर्स. कहीं ना कहीं ये लगता है कि ओटीटी थोड़ा क्लटर हो रहा है, बहुत सा कंटेंट आ रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज एक्टर्स बट एज व्यूअर्स, कि यार लोग क्या देखें वो भी कंफ्यूजन में है. I want you guys to answer this as a viewer and not as an actor. I don't think so. I think I consume content. मैं बहुत फिल्में देखती हूँ, बहुत वेब सीरीज देखती हूँ, सालों से देख रही हूँ. तो जितना ज़्यादा कंटेंट हो उतना अच्छा है. इनफैक्ट आई फील कंटेंट देखना इज बेटर देन हैविंग सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम द वर्ल्ड. So let's watch nice fictional stories that can inspire us, make us, move something in us. So the more the better, yeah. It's great that this is the time that we're in. I completely agree that I don't think, I mean, जितना ज़्यादा content होगा उतनी ज़्यादा variety होगी hopefully. And I think there should, for viewers, there should be a gamut of options and let them choose. And because I also, again, as viewers or consumers ourselves, we also watch a lot of content, right? We consume so much. And I want a variety. I want to be able to watch this when I feel like this, or something else when I feel like that. So yeah, why not? And of course, like, it generates work, and volume of work has only gone up since OTT. So yeah. Woo. Right. नहीं, मेरे हिसाब से तो ये ऐसी चीज़ है कि भले बहुत सारे शोज बन रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, बट लोग याद वही रखते हैं जो अच्छा है. और मतलब जो OTT की जो ऑडियंस है ना, वो इतनी ज़्यादा कमीनी है ना, क्योंकि वो टाइम नहीं देती. Spoiled for choices. 10 मिनट में अगर आपने उसको एंगेज किया तो वो आगे देखेगा, वरना मूव ऑन टू अनदर शो और फिल्म या जो भी देखना है. तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, और मतलब उस शो को, मैं शो की बात कर रहा हूँ, ताकि लोग देखें और एंजॉय करें. और बाद में भले 100 शोज आए होंगे, लेकिन लोगों को वही 10 या 15 शोज याद रहते हैं जो कि जिन्होंने कुछ मार्क छोड़ा है, या तो बनने दो जितना अच्छा बन रहा है, हम लोगों को काम भी मिल रहा है. हाँ, ये बात सही है. बट आई ऑल्सो फील कि हमारी जो ऑडियंस है, even me included as a viewer, हम बड़े लालची हो गए. We want more also, and we have opinions about everything also. तो हमें लगता है कि हमने अब सब कुछ देख लिया. तो I feel at some point we've become वो आधे शाने बोलते हैं ना, वो हम भी बन गए. तो I think like we should have more and more, but I feel as an audience we also need to understand that this is the time when we can try more. We can fail more, and every time we fail better with you. So then that's how we will be able to create the kind of content this nation requires us to, like, I don't know, fictitiously kuch dekha, arey wow, that affected me. It's better than watching Instagram reels, and it's better than saying, oh, mera to span of attention hi itna hai. So I feel like the audience also is evolving at this point. And it's not just Indian content. Yeah, today you have content from the whole world, different languages, different cultures. So I feel like that's good. I haven't seen more like content in OTT that I've seen now in the recent times, talking about the heartland of our country. You're getting to understand your own country through the kind of content you're watching. When I see aspirants, I understand. यार इतना I मुश्किल believe you're the होता है same यार, actor. हम लोग ऐसे You करते acted. हैं. So I good. did, and I love it. You feel like this, I feel like it when people watch Shehar Lakot. Thank you. Or Foundation for that matter. मैं थोड़ा विपरीत जवाब दूंगा जी. See, last में. हो गया है, और हम एक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा काम मिल रहा है, सबको बहुत अच्छी बात. लेकिन शारिब भाई ने कहा बहुत अच्छा होना पड़ेगा नोटिस होने के लिए. मुझे तो ऐसा लगता है कई ठीक ठाक चीजें हैं जो ठीक ठाक अच्छी भी हैं, वो भी थोड़ी अननोटिस निकल रही हैं, because there are too many things. I love it.
हम में से किसी ने किसका काम देखा है मुझे बताओ। अब मैं कंफ्यूज हूँ मेरे आंसर के मेरे को एक मैंने सारे देखे। नहीं मैं इसमें कोई मैं ये भी देखना है। मैं तो नॉर्मल चीज जो है वो स्टेट कर रहा हूँ। पहले जब मैं टॉरेंट से डाउनलोड करके पिक्चर देखता था पूरा माहौल बना के मैं वो फिल्म पूरी देखता था Yeah. और अंत तक रुचि रखता था। अभी ऑप्शंस ही इतनी है कि मैं खुद भी एज अ व्यूअर आई हैव आल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स। आई Yeah. स्टार्ट थिंग्स एंड इवन if for a second I'm getting bored मुझे लगता है कि But that is a whole different conversation. We are also on our phone. We are also like we're so diverted all the time. I feel right now because of the conversation that we are having and all that and the variety of shows we have. Right now is the time when it's truly democratic, right? So it's genuinely in the hands of the people. Right. Like because I started doing this as a consumer. If there's a content I don't want to see more of, I do not engage. I do not even dislike. I do not send it to someone saying this is so bad. No, I just don't. It doesn't exist Yeah, for me. exactly. So I don't engage. I don't feed into its algorithm. It doesn't appear on my timeline. In my head, it's gone. You know. Yeah, So, yeah. And that's how every one of each one of us is living. I would believe that we all have a certain. Like so many times someone says something and I'm like I don't even know what this is because it hasn't come on it hasn't reached me. Maybe because for whatever reason. So I think right now is the time when if as an audience if you like something, please engage with it. Please like talk about it, like tweet, whatever. I don't know however you do that. Yeah. But do that and then more content. And I feel shows like Aspirants and the वेलकम नवीन। This is what we need in content. Something extra Yeah, that to does. stand out. एक्चुअली ना क्या अभी इतना कई एक मिनट का कंटेंट इतना बढ़िया हो गया तो इसलिए लोगों को ये भी लगता है कि यार लोग 8 घंटे रील्स पे बिता देते हैं Yeah. तो यू नो बिकॉज वी आर आल्सो कंपीटिंग विद दैट Yeah. और मेरे को तो ऐसा लगता है हिंदुस्तान में बहुत अच्छी कॉमेडीज नहीं बनती हैं क्योंकि सब इंस्टा पे ही कंज्यूम हो रही है इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जो एक्चुअली दे वेरी गुड। मैं कल ही धारणा से मिला था। धरना हाँ Oh, she's so good. शी ओ सो खतरनाक he's a content creator अब हाँ उस किस्म की चीज superb आप है इंस्टाग्राम पे ऐसी देख रहे हो superb है वो तो यू नो तो now we competing with Oh yeah, that's every dance. Yeah. see if you go to Delhi weddings or Punjabi weddings now you'll find all mummies mausis they're all doing what Dharna is doing in those rooms। She's मैं bang तो on. अपनी बहन और माँ को फॉरवर्ड करता हूँ नहीं मैं ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना मैं उनको सल्यूट करता हूँ क्योंकि वो लोग अपना काम खुद बनाते हैं। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो ठीक है मैं खुद बनाऊंगा। But Sharib, it's like हमें नहीं था ना वो चांस, हमने ऑडिशंस दिए। ये सब ऑडिशंस ही तो हैं। I feel like creating content is making we went and did scene work and auditions. I feel like Instagram is full of auditions. They're workshopping live. Yeah, and they also make money and then so it's great. It's great time. अब जो भी रीजन ऐसे बन गए हैं तो अब तो वो करना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है यार। Yeah. वो मुझे बड़ा हाँ, difficult क्या- लगता है यार। I mean, not difficult. If we put our mind to it, we can do it. But अरे हाँ। कितना माइंड मेरे को करना ही नहीं तो exactly, you don't want to do हाँ, it. नहीं। You don't want to do it. That's what. But you can do it. It's है तो at the end of it all, we are all creative people. We can do it. No, we are not spoiled. We are collaborative. Because I remember when during lockdown I had to shoot something. We are collaborative. We are not spoiled. मैं तो already spoiled. I'm telling you, during COVID, I had to shoot something, and I was just like, how do content creators do this? They are their own makeup people. stylists. I did it. सब कुछ I also शूट भी did खुद it. कर Yeah, रहे हैं exactly. सब So you मैंने do it. जिंदगी में घर से ऑडिशन नहीं भेजा। I know. It's अभी stressful. भेजे तो हाँ, कभी मैं भी नहीं। तीन मैं खुद को ओके नहीं कर सकता हूँ। मैं भी नहीं कर सकती खुद को I ओके। can't set this face। You can't look at it. I mean, I'll have to take a shower. I'll have to set my hair. I can't। तुम्हें कोई हक फिर मैं नहीं। छोड़ूगा नहीं नहीं ये रोल दिल नहीं साफ करना। होना चाहिए कस्तूरिया दिल साफ ये रोल होना मैं नहीं करना। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तुम्हें कोई हक नहीं। दिल दूसरा क्या है देख के तभी मैं सेट वीडियो से चेक नहीं करता। I never go and Yeah, even check. I don't. Because I get distracted by my Yeah. physical presence। I'm very irritated with myself. I'm But like, And other things that shouldn't bother you start bothering you because you're like, why because am I you're doing that? you're looking at yourself. Yeah. बट ये सेल्फ टेस्ट है बड़ा त्रास जो जाकर कास्टिंग डायरेक्टर के वो साथ जो मिलके मजा जो वो That's करने वाली different, चीज होती है But ना after उसका- COVID ही ज्यादा हो गया। हमसे सवाल पूछने वाला है उसके नहीं, he's जवाब- enjoying. He's मतलब enjoying. ऐसे मैं- He's enjoying. I really thought he was staring at us No. saying, when are you going to stop No. talking? What's I his asked face? you, My yeah, अरे yeah. दूसरे He asked my बहुत टाइम बाद मिले। हाँ। एक तो तुम लेट आए। अच्छा by the way I'm with you, I'm with एक सेकंड उसका नाम ना धरना नहीं है धारणा धारणा है। कल पता लगा।
हाँ आपको तो लिखती अभी कुछ धरना पता ही I तो नहीं। just know आज मेरी उसके बारे में धारणा बदल गई। हाँ मैंने भी कल यही जोक्स मारे थे। हम दोनों का बर्थडे एक दिन के फर्क में है। मैं Oh, no 25 जनवरी wonder. के 26 The जनवरी। jokes. इनकी वाइफ का आता है उसके 5 दिन बाद इनका आता है और उसके एक दिन बाद इनका। आपके बर्थडे में तो छुट्टी होती है अरे हाँ, वही तो। मैं एक दिन से रह गया यार, मेरी अम्मी एक दिन रोक लेती। Guys, I just want to tell all of you, it's out of context, but there is a speciality, there is a special humor which only belongs to actors who are working on set. ये बस उन्हीं, and it's very close to dad jokes. So now you can understand what most of us have to live with people who crack stupid jokes. So इन हमारी दोनों को, हमारी सेट्स अपील कुछ और है भाई। that's what I mean. हम सेट पे सेट्स अपील लेके आते हैं। आप लोग सेक्स अपील लाती हैं, हम सेट्स अपील लाते अरे यार हम भी सेट्स अपील लेकर आते समझ हैं। आया कि जोक क्या पढ़ा हमने। हैं। नहीं धारणा, you said na, I was cracking the same jokes. Right. So now I want to ask that when you guys started, कहीं ना कहीं सबने एक छोटे रोल से शुरुआत की थी. People still remember you as Ready Ki Maid. You did right now, of course. Jawan, Kaveri Amma has become very famous, of course, and even Shaheen. I think both the movies wouldn't have been made without that character. I remember you in No One Killed Jessica, of course, and sir, आपने तो शाहरुख खान sir के साथ काम किया था शुरुआत में. You, of course, after I think you have mainly played kind of lead roles. अभी छोटा सा रोल किया था सपना versus Everyone में. मैंने भी छोटे अभी आजकल ही अभी छोटे रोल्स करते हैं। शुरुआत में लीड से की थी। स्पेशल अपीयरेंस Yeah, मेरा question यही था कि कहीं ना कहीं somewhere do you feel कि now it's like not about the length of the role, it is about the quality, and are you guys ready, like even in OTT space, अगर आपको मिलता है कि एक छोटा रोल भी है but important है, you guys will do it? Absolutely. I don't think the length of the role ever mattered to me, and that should never matter if you're an actor. That is one part. I mean, आप रील बना रहे हो खुद की 1 मिनट, अगर वो 1 मिनट आपको किसी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिले, अच्छे एक्टर्स को एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले, और अगर उस दिन के 8 घंटों में आपने कुछ सीखा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. बिकॉज आई फील लाइक दैट इज वेयर यू आर गेटिंग लाइक दी I get paid to be on set and learn a skill set that I didn't have the opportunity to learn at school or college or in an environment that motivated us to come together and ideate with each other. That's what school is supposed to do, right? So mere liye it's very exciting because I am on set and I'm learning behaviors, I'm learning attitudes, I'm learning the law of the land, the way it works. So for me it's not about the length, it has never been, and I hope it continues to be that way. मैंने फैमिली मैन के बाद स्कैम किया जिसके अंदर आई जस्ट हैड वन सीन, और वो सीन से मुझे जो प्यार मिला है, और वो सीन फर्स्ट टीजर में वो पूरा सीन उन्होंने डाल दिया था, तो वो लेंथ That एग्जैक्टली हाँ clustered one, yeah. So good. हाँ So मेरे तो सॉरी बोलो नहीं वही मैं कह रहा हूँ अभी जिस शो की आप बात कर रहे हो इट्स अ यूट्यूब शो किसी कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है बड़ा बट आई लाइक द स्क्रिप्ट आई लाइक द पार्ट इट्स लाइक वन सीन इन एवरी एपिसोड इट्स दैट स्मॉल पार्ट आई हैव डन हालांकि मेरी शुरुआत भी बैकग्राउंड एक्टर की तरह ही हुई थी शंघाई करके एक फिल्म है दिवाली ओह यस बिफोर सुलेमानी कीड़ा आई हैव डन अ वेरी स्मॉल पार्ट इन शंघाई तो हाँ मैंने भी छोटे रोल We're Anurag babies. No, Shanghai is not Divakar. Imran Hashmi and मैं दिवाली का एडी था पूरा एलएसटी शंघाई Oh. तो वो रोल भी मुझे जोगाड़ से ही मिला एडी नहीं, तू तो एडा है। Actually, I mean, I was in a steady, 9 to 5 sort of a job. So, मेरे लिए when I became an actor, in itself was like I want challenges. So, role बड़ा हो छोटा हो, I mean, I just did Jawan. I don't think anything more can be said than playing somebody who's thrice your age. So it's challenging and that's why I'm acting. If it's not challenging, then I'm not interested. If it's one scene and मुझे कुछ impact करने का मौका मिलेगा, like what Sharib did in Scam, it's amazing, and you move from project to project. Like she said, you learn, you adapt, you see how people are, you see the world, I think एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हम बहुत intellectualize कर देते हैं चीज़ों को, but an actor and a creative person, we are always living and breathing what we do because we are always observing people. Life is our biggest playground, and we just get to put it out there when we get a job.
So we are तो like hungry. हमें you know like she said we've not learned it, or we don't come from families जहाँ ये बातें होती हैं या हमें templates पता है किसको कैसे deal. We don't know all that. So the more chances we get to do things, you know, the better it is. And I think because of those chances we are sitting here with you, right? Because we took those chances. You all went to school. No. Huh? None of us went to school. No. You went to school. Not Film Not school. acting. छोटा स्कूल वो तो मैंने भी किया. Workshop. I mean, हाँ. acting Yeah, on the workshops job we've we all see. done. Yeah. सब on the job. Yeah. गागरू से बहुत कुछ सीखा। Yeah. किससे? गगरू से. Like I feel that it's like it's all, which I keep telling people also. It's better to be a working actor than just sitting at home and calling yourself Yeah. an actor. And especially आज की date में when there's so much work happening, and you won't, like Kubra said, you won't learn. I mean, not in as many words, but like your set is your biggest school. Like the kind of stuff you learn being on set. Even if you have I tell people to just hang out, go on a set Yeah. and just hang there. Like, you know, because they were saying that we're not from the industry. We don't, like, we learned on the job how to be on set, what it means to be on set. Like, what is it, you know, like, where's the lights and camera, and just the overwhelming presence of the set, you know. So we've learned all this. And yeah, so I think it's important to, as long as it's impactful and as long as there are other factors also that kind of fall in place, because a lot of times with small roles comes bad treatment. So as long as that is taken care of. Yeah, let's talk about battery. Oh God. You wanna? No. Go for it. Come on. Finish your answers, guys. Next question. One second, I want to do this since he did this. Oh. No, आप लोग नहीं, आप लोग कर लो अपना. मोहब्बत है, हम बात कर रहे हो. होती तो मैं ऐसे ही करता। यहाँ पे बंदे माइनॉरिटी में हैं. It's not men or women वाला thing. Yeah, okay, whatever. नहीं, वो ऐसा अपना कुछ है. बैटल ऑफ Not सेक्सेस. saying men or women. Yeah, everything is getting explained. सेट्स के अलावा ऑन द जॉब के अलावा मैंने तो ऑन द ऑडिशंस मैंने इतना कुछ सीखा है ना. मैं 3 साल में सिर्फ ऑडिशन दे रहा था जब काम नहीं मिला था. बट उन 3 सालों में मैंने जब भी मुझे ऑडिशन कॉल्स आते थे और अगर एक दिन में 3 ऑडिशन देने जाना है, मैं आई यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट कि यार आज मुझे 3 कैरेक्टर्स करने को मिलेंगे. मैं ऐसे चाहता था कि मुझे जॉब मिल गया है, भले मिलता नहीं था, लेकिन मैं उतने एक्साइटमेंट के साथ में मैं ऑडिशन देता था. और ऑडिशन हम एक्टर्स का रियाज होता है क्योंकि हम कहाँ पे क्या करने जाएंगे और कोई एक्सरसाइज हमको नहीं पड़ती. जिंदगी भी रियाज ही है पूरी. तो मैं इनफैक्ट जो आपने बोला कि हम तो हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, मैंने भी शबाना आज़मी जी का एक इंटरव्यू देखा तो वो पढ़ रहा था तो उसमें वो कह रही थी मैं एक फ्यूनरल में गई थी और वहाँ पे जिस तरीके से लोग बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से मतलब मैं ये और वो उनके किसी क्लोज रिलेटिव का फ्यूनरल था, बट वो सोच रहे थे कि ये चीज़ मैं किसी फिल्म में यूज़ करूँगी. मैं बोला यार ये तो मैं भी सोचता हूँ. When I'm crying in a real situation, like I'll be fighting with Yeah, someone same and here. I crying, make mental and notes. suddenly, yeah, I look in the mirror कि मैं कैसे याद रखूंगी मैं. remember this is Adi crying. I do this too. Now you guys know. Yeah, but that's why we are. It's messed up. That's why very conscious. we are actors. When I'm in a real moment, it's when all this one happens. Yeah. तो इसीलिए तो ऑफ है ना हम एक्टर्स इसीलिए. मैं तो कई बार We are always out of body हाँ looking at चलता ourselves. रहता मैं कह रहा हूँ मैं बहुत फनी सी बात है, मैं तो कई बार ना सॉरी इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, We'll decide Okay. वाली बात है. हाँ, Yeah, बताओ, we'll बताओ. decide. तू बस बात मैं बता. कई बार अपने इंटरव्यूज भी देखता हूँ तो मुझे लगता है यार इसमें कितना नेचुरल बोल रहा हूँ मैं, नेचुरली लाइव बोल रहा हूँ मैं. Yeah, why don't I do this on camera? ऐसी- Yeah. But you're very natural, यार और नवीन. उसके बाद Very मैं natural. लेकिन ये और भी ज्यादा है ना. हाँ. ये मतलब इसमें कुछ भी आप यू नॉट थिंकिंग अबाउट योर लाइन है ना, तो मेरे को वो भी दिखता है कि यार ये करना है. खुद ही को इंस्पिरेशन बना के कर रहा हूँ कि Superb. ये वाला सच क्रिएट कर रहा है performances में. Yes. My next question is, which is something where whenever I see जब एक शो का season 2 वगैरह आता है, whenever I see it, you guys are just perfect in the character that you had played in season 1. कितना difficult होता है to do that? I know that you haven't been a part of a franchise series yet. You have to go find new work. That's okay. Every time they kill me, I'm like, I काम दे दो. If Audition करवा लो. a character gets killed, you get sympathy. It's great. Yes. You did Nusrat this year. I think even चाहे फिर वो ट्रिपलिंग हो या 4 more shots. So yeah, every time JK, I think we love that character. बल्कि I don't know, I'm saying Raj and DK, Saira and JK या कुछ बनाओ कहीं मिला के कुछ universe करो. हम बड़ा
सीरियस रोल करेंगे, देख लेना आप, हम बड़े सीरियस एक्टर। अभी सीजन 3 शुरू हो रहा है, हो सकता है क्रॉसओवर हो कुछ And of course, फर्जी I का। have seen aspirants too. तो उसमें भी I didn't feel कि कहीं पे भी acting wise there was anything that was not proper. How difficult it is जब ये season 2 करना होता है to go into that character, because बीच में of course you have played other characters, real life में बहुत कुछ चल रहा होता है. How difficult is it? Difficult. It's actually easier. It's easier because आपके पास you have your skeleton of the character, you have lived the character, तो आपने develop किया होगा, आपने back story बनाई होगी, writer director के साथ बैठे होंगे. Season 2, if there's a season 2, it only helps because now you add more things to the character. You're like, अच्छा वो चीज़ ऐसे develop हो गई है, so it is actually. I think the problem is that जब time gap होता है, like Asur 1 and Asur 2, we shot Asur 1 2018. 18 and 19. Right, and Asur 2 was shot in 2022 or 21, I don't 22. Yeah, so it was after lockdown and in the story हम बस 3 महीने के बाद आ रहे थे, तो वो बहुत मतलब just to wrap my head around it for the first 10 minutes was like, oh my god, okay, let's get back to this. और सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, but other than that the character is well cushioned. You just have to step into it, make it better, I feel. I'm तो having said that, like this is true, but जैसे ही मुझे पता लगता है that there's another season happening of whichever show, I start panicking because I feel like, oh my god, I've forgotten it. What this character was, I forgot. कल हुआ मेरे साथ. कल I was talking about this, like another season of something I've done, and I literally, like, I could feel my breath was getting shorter, and I was like, okay, I'm getting anxious. But that's good. So that's what, it's good because I've seen it in the past turning out to be positive, but every time I'm in that position, I'm just like, oh my god. Which one it is? Tell us. Wait, discussions are on, okay. But the minute you kind of get in that process again, script jab aati hai, then you start reading it, and you're workshopping, meeting, and then everything just like, then it feels like, why was I panicking? Why was I so scared? But I get that like butterflies in my stomach. मेरे लिए तो मतलब जेके प्ले करना बहुत मतलब इन्जॉयबल एक्सपीरियंस रहा है, और जब फर्स्ट सीज़न को जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया और हमने वो कैरेक्टर काफ़ी मतलब अच्छे से सेट कर लिया था, जब फर्स्ट सीज़न रिलीज़ होने वाला था उसके पहले हमने एक मेजर शेड्यूल सेकंड सीज़न का भी कर लिया था तो हम तो बहुत उसी फ्लो में बह रहे थे, और लोग जब सेकंड सीजन आने वाला था लोग पूछते थे कि इस बार आप क्या अलग करने वाले हैं। बोला अलग क्यों करूंगा मैं कैरेक्टर है, मौसम थोड़ी कि अभी बदल जाएगा और क्या, तो जो कैरेक्टर है वो तो बेसिक तो वही रहेगा ना, उसमें चीज़ें अलग होंगी, सिचुएशंस अलग होंगी, और तो उसके हिसाब से हम बिहेव करेंगे, कैरेक्टर तो वही रहेगा। एक्चुअली साल सेकंड सीजन हुए हैं तो Aspirants, एस्पिरेंट्स और पिक्चर्स, मैं दोनों में ही बहुत वरिड नहीं था टू डू व्हाट आई डिड इन द फर्स्ट सीजन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दोनों ही सीजन्स में लकीली मैं कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था, और मेरा कैरेक्टर जैसे अब सीजन 2 पिक्चर्स का जो था, I'm assuming people who are watching they have seen it, and if they've not seen it they're not going to watch it. तो उसमें नहीं यार अच्छा है, a lot of people have left me. No, like he means अब तो नहीं देखेंगे. A lot of people have left me. I'm in a new world. तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा था कि सीजन 1 वाली मेरे को कोई चीज़ रिक्रिएट करनी है. I just had to create these moments. मुझे इन मोमेंट्स को सच्चा बनाना है, और जो राइटर्स ने काम किया हुआ है उसको रहते हुए, और एस्पिरेंट्स टू भी मुझे ऐसा लगता है कि डीएम की स्टोरी ज़्यादा है, और डीएम हमने सीजन 1 में नहीं एक्सप्लोर किया, और मैंने खुद डीएम इस सीजन में ज़्यादा बनाया है, तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि मतलब हाँ हो सकता है मेरी काम एनर्जी रिपीट कर रहा हूँ, बट द कैरेक्टर वाज क्रिएटेड इन द सेकंड सीजन अकॉर्डिंग टू मी, एंड हाँ वो तो अब राइटर्स ने वर्ल्ड इतना रियल बनाया कि फॉर पीपल they can see कि हाँ this guy can actually go there. So yeah. एक्चुअली दोनों सीजन्स में ये दो अलग Season 1 was हैं। more about the past Abhilash. हाँ। This was more about the present Present Abhilash. Yeah. आपने तो देखा है ना कुबरा. But even in this, you had throwbacks. Like, Yeah. So that's what, and I was wondering how hard it must have been for you to go back into like the guy who has, like failed
So this is your last attempt, this is your do or die situation, and then you're there in that position where you've achieved everything, and those are two different mindsets. I too felt in 2 seasons. So it was very interesting for me to watch. Yeah, there were 4 characters. मतलब अभी का भी past was very different from पिछली बार का past. Yes. Also, you're Yes. the hero, man. क्योंकि वर्ल्ड ही बदल गया इसका. अभी दोस्त Yeah. नहीं है तो मेरे ख्याल से सिचुएशन बदल जाती है तो आप रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करते हो. तो देन यू डोंट रियली हैव टू थिंक अबाउट कि क्या मुझे रिपीट करना है सीजन 1 से. आई थिंक ऑफ कोर्स कुछ कुछ तो रहेंगी. I love that hesitation that you had with Dherya in the show. And because I'd watched Aspirants a long time ago, season 1, when season 2 happened, I was like, oh, should I know what I'm going to pick up from as a viewer? But I didn't, because the writing was so clear. And the emotions and the dependency on each other's character was so well established and spoken of in your lines. And I feel that's where it, becomes so much easier to do a job as an actor, because your writers have taken so much care of it. And I don't think we credit our writers enough. When you talk about a content heavy show, Yeah. like most of us have been a part of, why does Tippling work after 3 seasons and still you have something to take away? The writing is great. Or a show like Kala Pani or Aspirants. Dipesh और शहर लखनऊ Dipesh is the यार, guy. that the writing is Dipesh. Dipesh is the guy who wrote Aspirants too. बहुत सुपर है दीपेश. superb. Yeah. मिलवाऊंगा मैं कभी आपको उनसे. Would love that. Also, as we are talking about season 2s, जैसे असुर took a long time to come. ठीक है, एस्पिरेंट्स भी आई रिमेंबर मैंने अभिलाष का बीच में कहीं इंटरव्यू किया था और मुझे नीचे सिर्फ कमेंट्स आ रहे थे व्हेन आई हैड मेट यू आई थिंक फॉर लक्कड़ बग्गा अर्लियर दिस ईयर, तब भी मुझे नीचे कमेंट्स आ रहे थे असुर 2 का कब पूछा कि नहीं आपने. Now this is the kind of comments that I get. ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 होंगे. You guys have like million followers on social media. How do you tackle that जब लोग नहीं guys, मेरे को आइडिया नहीं है. मेरे हाथ के मेरे उसके नीचे. मेरे 1/4 It is not important. Oh my God. 500,000 है. क्राफ्ट मैटर करता है, ठीक है. मेरे को वहाँ तक की नॉलेज है. लैक्स बोल दिया मैंने चेंज कर दिया. नहीं मिलियंस भी ठीक है. हमारी तो एस्पिरेशन नहीं है ना. How do you tackle that जब ऐसे like literally fans पीछे पड़ जाते होंगे सोशल मीडिया पे भी. इट्स लवली, इट्स अमेजिंग यार कि वो हमसे हमारे कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं. उससे ज़्यादा और क्या चाहिए. आई मीन उसको ज़्यादा सोचना उसके बारे में इज क्वाइट स्टूपिड. वी एज एक्टर्स आर सो ग्रेटफुल कि there are so many people who are just wanting to see us. एंड मेरे लिए तो ये पूरा साल मैंने वही देखा है दैट मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट ऑनलाइन ही या जब भी मैं बाहर जाती हूँ लोगों से मिला है, दैट हैज़ बिन माई स्ट्रेंथ. इट्स ऑलवेज बिन माई स्ट्रेंथ इवन व्हेन आई वाज डूइंग टेलीविजन, बट दैट्स बिन माई स्ट्रेंथ ऑलवेज ऑन डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स व्हेन फोन्स डोंट रिंग, व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हेन यू योरसेल्फ हैव टू पिक योरसेल्फ अप एंड फिगर आउट क्या करना है क्या नहीं करना. तो वो लोग कितना आप में कितने इन्वेस्टेड हैं, या वो दिस सेंड यू दैट strength ki I hope you're like okay I can't sit back, I can't there's somebody who likes my acting, so okay Ridhi, you don't have a reason to excuse to sort of give up on yourself. तो इट्स ग्रेट यार, बहुत अच्छा लगता है कि वो पूछते हैं और जानना चाहते हैं. आई मीन जब मैं पिक्चर्स 2 के लिए भी बैठी थी तो वहाँ पे एवरीबडी वाज लाइक फाइनली पिक्चर्स 2 इज कमिंग आउट एंड देन असुर 2 कब आ रहा है. इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग. People want to know when Sacred Game season 3 is. या एग्जैक्टली नहीं बना रहे यार. हो गया. ट्रायल सीजन 2 भी पूछ ही रहे होंगे. ट्रायल का भी पूछ रहे हैं, फर्जी का भी पूछ रहे दैट्स हैं. ग्रेट. इट्स अमेजिंग. बनेगा 100% बनेगा. पहले फैमिली मैन सीजन 3 बनेगा. फैमिली मैन सीजन 3 उसके बाद पहले. प्लीज क्रॉसओवर वहीं से शुरू कर लो यार. आई एम मिसिंग राजन डीके अ लॉट यार. मैं बहुत मिस कर रही हूँ उनको यार. मैंने तो उस दिन डीके को फोन कर लिया है. बर्थडे भी था ना अभी रिसेंटली, मैंने फोन भी किया था यार. आई एम मिसिंग यू यार. परसों ही. ये अच्छा है. I just want to ask you this. I think last time हमने बात की थी रिद्धि when I was there for बदतमीज दिल. I wanted to ask this कि कहीं ना ये अभी तक शायद से Sacred Games शुरू हुआ था, that was kind of a pioneer thing for Indian web series that happened. Like till now there's this debate about कि OTT पे censorship रखो. What is your take? Yes, it is. Like I mean, just earlier this year at one of the press conferences, Superstar said that that he thinks that there should be censorship on OTT. What do you have to say on this? Nothing. I think you have a very good rating. I have system. censored views on this. AUA, PG-13, PG-18.
I think that's good enough for the audience to be smart enough to decide what do Yeah. they want to watch and what do they want to show their children. Yeah. Why, dude? I love watching animated series. I love watching animated movies. वो तो बच्चों के लिए बना रहे हैं ना. मैंने तो इतनी सारी चीजें सीखी हैं animated things से. तो if you're a certain age and your mind is evolved to understand, like, okay, since we're talking about censorship, this is something that I randomly thought of when I saw the poster of Oh My God 2. मैंने फिल्म देखी है और मुझे नहीं समझ में आया कि उस फिल्म को अडल्ट क्यों दिया. I haven't seen it. पूरा पर्पस I haven't seen it. इतनी खूबसूरत फिल्म मैंने बनाई 1 है. देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी. बहुत अच्छी फिल्म थी. भी बहुत अच्छी है. हाँ. मैं तो रैंडमली पहुंच गया और मैंने कहा हाईलाइट ये तो Yeah, अच्छी फिल्म है. एंड उसके yeah. बाद मैंने आपका इंटरव्यू देखा. वो मैं तभी खुश हो गया कि अकेले किसी ने बातें कर दी. You know this I'll share. मैं थिएटर में गया था कोई और मूवी की टिकट्स लेने और मेरे पीछे लिटरली there was a couple with a 12-13-year-old daughter. उन्होंने Oh My जो 2 की टिकट ले ली थी thinking कि adult नहीं होगी and now theater people are not allowing the daughter. So there are poor people standing कि हमें पता नहीं था adult है किसी को चाहिए क्या. This is what I experienced because OMG2 is a franchise and I think जब ट्रेलर भी आया था तो ऐसा नहीं लगा था कि कुछ होगा. So yes, I think what she pointed out is really correct, you know, and I remember talking to someone else also from the films team कि ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है. I was just there. रोल जब से स्टोरी टेलिंग चल रही है, ये सेंसरशिप, जब मैं घर पे बैठ के इंटरव्यूज देखती थी तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेंसरशिप. नाउ Because that's what I'm saying, yeah, till the time when this conversation about censorship and the answer is always let the people decide, let's give credit to their intelligence. वो लोग इंटेलिजेंट हैं और उनको डिसाइड करने दो वो क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं. either they will regret watching something or they will enjoy watching something or they will not miss anything. Like she said that if I don't want to watch something, I don't indulge in it. Simple. No, also films have been censored, right? For ages now. Is there has that made a difference? I mean, I just want, we have 2 models in front of us to compare. So I don't know if the policymakers should do it. It's not my job to. But like, has censorship helped? Because then if you're talking about censorship, then you have to discuss what stuff to censor. You know, because what is correct? Because misogyny is still very rampant in all the content that you watch. That is no one is talking about censoring that. And they shouldn't. I think nothing should be censored. I come from the view that nothing should be censored. There should be certification, yes. Like you were saying that, you know, there should be age appropriate certification and allow the parents or the guardians or whoever to decide. And there should be execution of that age limit in theatres, because again I think that's somewhere we lack. That I know, and like so many young people just will go watch an 18+ film. So all of that, as long as then I don't think we need censorship, and maybe censorship should be started at education is what we should focus on rather than. Very good point. Yeah. But you know, these points have been raised since We've been talking about 30 years. लॉन्ग टाइम. हमारा क्या काम है? हम तो ऐसा हम भी round table उसमें में ऐसा मैं puff off खा के उसमें ऐड कर रही हूँ in हम that तो यही बोल रहे हैं, voice. इतने साल से बोल रहे हैं. जैसे शोले जैसे शोले का क्लाइमैक्स था, उसके 2 वर्जन्स थे. पहला वाला जो वर्जन था उसमें गब्बर इज किल्ड ब्रूटली, मतलब खून उसको मार के वो कर देते हैं. तो वो सेंसर ने वो किया कि ये बहुत वायलेंट है, और उन्होंने फिर उसका दूसरा वर्जन निकाला कि भाई पुलिस भी है, रहती है यहाँ पे, और वो आते हैं और उनको जब वो लास्ट पैर जब वो मारने वाला होता है तो वो पुलिस आकर पकड़ लेती है और उनको गिरफ्तार करके लेकर जाते हैं. तो सेंसर तो तब से मतलब कुछ ना कुछ चीज़ बातें तो तब से हो ही रही हैं कि वायलेंस का फायदा नहीं हुआ यार. इतना बेड़ा गर्क सोशल मीडिया ने कर दिया अभी. क्या ऐसा है जो नहीं देख सकते आप, और क्या ऐसा है जो देख सकते हैं आप. This is very good point. Who's listening to us? No, I think actors should be heard. I think, and I think I really like education में should be. देश तो और ही बिगड़ गया. फायदा क्या हुआ सेंसरशिप से? जिसको जो करना नहीं यार, फायदा होगा. हम लोग तो एजुकेटेड हो गए कम से कम. बस एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो भी आप बना रहे हैं. उसके अलावा मुझे नहीं लगता एक. If you're civilized and you're in a civilization, responsibility lies with the citizen. And वो मतलब एक civilization ही खत्म हो जाएगा अगर आप you know ये शुरू कर देंगे कि हम decide करेंगे आप क्या देखें और क्या नहीं देखें. Certification and ये लोग का कॉल.
You came late for this. You will be late for the shoot. It's fine. नहीं मैंने से देखा ना. कंप्लेंट किए इसने. एक बार मैंने एक किस्सा सुना है, ये तो इन्होंने इंटरव्यू में फोन उठाया है भाई. ये तो इंटरव्यू में डोगरा पे होगा ना, आगे एडिट करोगे डोगरा पे फोकस होगा. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये तो इन्होंने इंटरव्यू में फोन उठाया ना. हाँ, इन्होंने इंटरव्यू में फोन उठाया. एक प्ले चल रहा है, गुजराती प्ले, और काफी नामी एक्टर हैं जो उस वक्त स्टेज पर. नहीं तो नहीं तो प्ले चल रहा था और अचानक फोन की घंटी बजी तो उन्होंने फोन उठाया. उन्होंने उठा लिया. हाँ, हेलो शोमा छू, ओके. उसके बाद में रख दिया. नहीं इनकी नहीं, एक और एक्टर काफी. This was important. No problem. No problem. Are you getting late for your child? No, everyone. He is the most forgiving, at least in this circle. Nah, because yeah. So now entering 2024, क्या एक चीज है जो आप विश करते हो कि 2024 में आपके साथ हो? रेजोल्यूशन ही पूछो ना. हाँ चलो रेजोल्यूशन ही बता दो. क्या हो तो भाई. Wish. No end to that. Let's manifest something. क्या हो? I love what Wish. Ridhi said. Yeah. Okay, like what she said was like, this is just the beginning, and I always look at every new year as a new beginning. And ठीक है यार, अगर आपने पिछले साल या पिछली पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, no problem, you have a new beginning. So time is something that you can use and take, and then move forward. And I feel like, honestly, this is my feeling that all of us here, including you, we're all doing things that make us happy. So as far as we retain the fun that we have in what we do, and continue to grow as human beings and be kind to each other and be professional in what we're asked to do, it's a good year. Bas. I think it's हम सबके पर्सनल ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं जो हम करना चाहते हैं. तो नाउ टू सिट डाउन एंड टेल यू दिस व्हाट आई वांट, इट्स द ईयर. एंड आप यही चाहते हो कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है उससे आगे करो, वो लर्निंग्स को आप आगे लेके जाओ, अनलर्न करो, पुट योर सेल्फ, आई मीन फॉर मी पर्सनली, पुट योर सेल्फ इन सिचुएशंस विच आर डिफिकल्ट, विच यू फील लाइक कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे. बट आई डोंट रियली लाइक टू सिट एंड प्लान एंड बॉक्स माई सेल्फ एंड से ये मेरा, like somebody was asking me the other day ki what do you want to do, and of course I said I want the Oscar, and that person has actually told me that's it, you just want an Oscar. अब उसके आगे क्या है? Can you imagine? Yeah, so that's what I'm saying, that and I love that. No, I was want an island with my name. No, but I love that ki why limit yourself to anything. So I think the idea is to be unlimited and to like मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि relevant रहने से ज़्यादा खुद को be open to change. Yeah. And you'll always be relevant, good. yeah. You'll always be good. You'll always don't be like मैं तो ऐसी ही हूँ. I think that's the worst thing. या मुझे पता है. I love Yeah, that. I know what to do. That's the worst thing for any human being. Forget actor or people in creative fields. Yeah, like when people say, "Oh my God, you haven't changed," I'm like, no, I can't be the same person for 5. I hope I've evolved and grown into a better version or whatever. एक शेर है जो मुझे बहुत सही लगता है इस सिचुएशन के हिसाब से कि हाँ यो एक शेर है, अभी दुम लगाने की देर है. तो एक शेर है कि एक साल गया, एक साल नया है आने को, एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को. Oof, so true. तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ तारीखें हैं, वरना हम तो मतलब उस मोमेंट में जी रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, और सिर्फ तारीख बदलेगी लेकिन हमारा जोश, हमारी उम्मीदें और वो सपने वो सब तो बरकरार रहेंगे. और कितनी सारी चीज़ें करनी है, कितना कुछ करना बाकी है. Now. आप भी 40. और मैं जान में I'll be 40. अरे I am 40. वेलकम टू द ये गागरू Club. 20 से निकल So do I. I'm turning 22 times over. Yeah, we all Me are. also, yeah, 22 times. So हाँ, मतलब मैं उस चीज को लेके थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ
Yeah, I'm making this thing videos for my friends who are turning 40. I hate it. मैं तो Friends are दूसरी not तरफ turning जा रहा हूँ 40. अभी। Oh my God, it's been now you're turning 40 very soon. जैसे डोगरा मेरा स्क्रीन गिरा I can't- अभी कल एग्जैक्टली 40 दिन रह जाएंगे 40 का होने मैं सोच रहा हूँ ऐसा कोई पोस्ट डाल दूँ Yeah. टर्निंग 40 40 to 40. 40 to 40. 40 to 40. Say 40 likes. 40K 40K 40,000 40 something भी तो हाँ 40K वही कह रहा हूँ ना मैं 40K But then how can we tease you if you don't say 40? Yeah. Yeah.